Moving on, as another Hindu man was killed in Bangladesh, 30-year-old Amrit Mandal, who was lynched by a group of villagers in Bangladesh's Rajbari district late on Wednesday. This is the second case of lynching of a Hindu man in just 1 week. On December 18, Deepu Das was beaten to death in Mymensingh and his body was set on fire over allegations of blasphemy, charges that were later found to be baseless. The Yunus government denied any communal angle and called Amrit an extortionist and a wanted criminal. Officials further claimed that the victim had an active arrest warrant against him. Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina lashed out at the Yunus government, accusing it of perpetrating unspeakable atrocities against non-Muslims. She added that the Bangladesh government is setting horrific precedents, such as burning religious minorities to death. These back-to-back killings of Hindus that have reignited anger over the living conditions of Hindus in Bangladesh. Voices from India and the international community that have condemned the attacks. One of my friend had sent me a post that these people are destroying all the music instruments, paintings, which take years of hard work. And me being a Muslim, I've never been grown in such a way that I only follow one religion. So for me, music is my religion, and they have not only hurt my sentiment as a musician, but also as an Indian. Because I don't see Hindu people anything separate from us. They are humans after all. And I really think that these kind of violence should stop immediately, and I would actually never go to Bangladesh ever. I have blacklisted it already. भारत में सिर्फ 7% दूसरे धर्म के लोग थे और आज उनकी संख्या 18% हो गई है। इसका मतलब हम संवर्धन कर रहे हैं, हम सबको सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जहां 11% जनसंख्या थी हम लोगों का, वो जनसंख्या 1% तक रह गई। इससे साबित होता है कि जो हमारे तबके के लोग हैं उनको हम लोग परेशान किया जा रहा है या धर्म के आधार पर उनको तंग तबाह किया जा रहा है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बांग्लादेश कमोबेश इसी लाइन पर अब चल रहा है। वहाँ जितना हक अन्य लोगों का है उतना ही हक जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनका भी है, लेकिन उनको चुन चुन करके मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। ये तो अनर्थ है। It appears that it is an organized incidents which are happening against the Hindus. The entire nation stands by the minorities of Bangladesh, and though the diplomatic relations with Bangladesh are being continued and the government-to-government efforts are being made to stop this incident, but however, these incidents are nothing but a sign of unrestness among the people of Bangladesh whose political situation is in turmoil. भारत को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वहाँ के सरकार पर, वहाँ के प्रशासन पर, वहाँ के जो नेतागण हैं, सरबराह हैं, उनको इस बात से आगाह करना चाहिए। ये मुनासिब नहीं है किसी भी देश में, इवन बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कि अल्पसंख्यक के खिलाफ अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है या इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है तो आवाज़ उठनी चाहिए। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और ये चिंता का विषय है। सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार कैसे तलब कर रही है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को, वो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है कि वहाँ माइनॉरिटीज़ पर हमले हो रहे हैं।